good morning students. I hope you all are great and doing good in your studies. Today we are going to start our chapter 3 which is computer memory. So in this chapter we will going to learn about कि जो भी हमारा information होता है, हमारे data या instructions होते हैं, जो भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर एंटर कराते हैं वो स्टोर कहाँ पे होते हैं, कौन सी मेमोरी है जहाँ पे भी हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है. So without wasting any further time, let's understand this chapter. The name of our lesson is computer memory and the topics which we will learn here are storage units, computer memory, types of primary memory, storage devices. Now let's learn about computer memory and storage media. So once upon a time, Nidhi and Karthik were computer friends. Nidhi loved storing memories, but Karthik had none. यानी कि जो एक बार की बात है, दो फ्रेंड्स होते हैं कंप्यूटर फ्रेंड्स जिनका नाम है निधि एंड कार्तिक. तो जो उसमें से जो निधि है उसको क्या पसंद है, स्टोरिंग मेमोरीज, बट जो कार्तिक है उसके पास ऐसा कुछ नहीं है. वन डे दे फाउंड अ मैजिकल मेमोरी बॉक्स. एक दिन उनको एक मैजिकल मेमोरी बॉक्स मिलता है. दे ओपन इट, वो उसको ओपन करते हैं एंड इट स्टार्टेड श्रिंकिंग देयर मेमोरीज. और वो क्या करती है, उनकी मेमोरीज को श्रिंक करना स्टार्ट कर देती है. निधि पैनिक, निधि जो है वो पैनिक हो जाती है. दे हैड टू लर्न अबाउट कंप्यूटर मेमोरी टू सेव देयर मेमोरीज. उनको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपनी मेमोरीज को सेव करके रख सके. दे रेस्ड अगेंस्ट टाइम लर्निंग अबाउट रैम एंड स्टोरेज. फाइनली उन्होंने फिक्स किया मेमोरी बॉक्स को, बट कार्तिक हैड अ बिग सरप्राइज. He had stored all their fun memories inside his heart. They laughed and promised to keep learning together forever. नाउ स्टोरेज यूनिट्स क्या होती हैं? लाइक आवर ब्रेन, कंप्यूटर स्टोर करता है डेटा को टेम्परेरीली यूजिंग शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरीज. द डिवाइसेस व्हिच हेल्प अस इन स्टोरिंग डेटा परमानेंटली आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस. ऐसे डिवाइसेस जो हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करने में हमारी हेल्प करते हैं उन्हें हम स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं. वी कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम दीज डिवाइसेस व्हेनेवर नीडेड. हम इस डेटा को कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इन डिवाइसेस से जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी. Computers are made up of electronic circuits which have just two states. कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से मिलकर बनते हैं जिसमें दो स्टेट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑन या फिर ऑफ. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स अंडरस्टैंड करते हैं हमारे डेटा को ओनली इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, जिन्हें हम बोलते हैं बाइनरी नंबर्स. A circuit translates zero as a command to switch off and one as a command to switch on. The data stored in a computer is in the form of binary digits. हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है, जिन्हें हम बोलते हैं बिट्स. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन. बिट्स क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर. अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट. 8 बिट्स का जो ग्रुप होता है हम उसको बाइट बोलते हैं. वन बाइट इज यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर इन द कंप्यूटर. और एक बाइट का यूज किया जाता है एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए इन आर कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल जो वर्ड है मेमोरी, ये रिक्वायर करेगा 6 बाइट्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड 6 into 8 इज 48 बिट्स इन द मेमोरी. ये जैसे हमारी मेमोरी यूनिट है, 1 बिट इसकी वैल्यू होती है 0 या फिर 1. 1 बाइट की वैल्यू होती है 8 बिट्स. फॉर एग्जाम्पल दिस 1 किलोबाइट की वैल्यू होती है 1024 बाइट्स. 1 megabyte is 1024 kilobytes. 1 gigabyte is 1024 megabytes. 1 terabyte is 1024 gigabytes. 1 petabyte is 1024 terabyte and 1 exabyte is 1024 petabyte. कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. यहाँ पे मेमोरी किसकी तरह एक्ट करती है? एक ह्यूमन ब्रेन की तरह एक्ट करती है. इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस. कंप्यूटर मेमोरी इज अ फिजिकल डिवाइस. कंप्यूटर मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस है which is capable of storing information temporarily या फिर permanently based on the type of storage. ये जो डिवाइसेस होते हैं ये हमारी इंफॉर्मेशन को टेम्परेरीली भी स्टोर कर सकते हैं एज वेल एज परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं, बट ये किस पे डिपेंड करता है? उनके टाइप ऑफ स्टोरेज पे डिपेंड करता है. It is one of the most important parts of our computer system. Computer cannot perform simple tasks without memory. कंप्यूटर जो है वो बिना मेमोरी के सिंपल टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता. कंप्यूटर मेमोरी इज मेजरली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, प्राइमरी यानी कि इंटरनल मेमोरी एंड सेकेंडरी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी. तो मेमोरी हमारी कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मेमोरी में वी हैव रैम एंड रोम एंड सेकेंडरी मेमोरी में वी हैव हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, सीडी डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड. तो लेट्स लर्न अबाउट प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं. इट इज द बिल्ट इन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर. ये हमारे कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी होती है. इट इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. However, it has limited storage capacity. यहाँ पे storage capacity थोड़ी limited होती है, but still it is the fastest of our computer.
कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी, हमारी प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर रन नहीं कर पाएगा. The performance of a computer is mainly based on storage capacity of its primary memory and the speed of the CPU. As more capacity and speed, better will be the performance. जितनी अच्छी speed और capacity होगी, उतना अच्छा performance यहाँ पे हमें मिलेगा. Types of primary memory. तो primary memory is further divided into two types. पहला है RAM, which is read access memory. So it is the main memory of our computer. ये hold करता है those data and instructions on which the computer is currently working. ऐसा डेटा और इंस्ट्रक्शंस जिस पे हमारा कंप्यूटर करंटली वर्क कर रहा है वो यहाँ पे स्टोर होता है. इट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सेस मेमोरी ड्यू टू द रैंडम सिलेक्शन ऑफ मेमोरी लोकेशंस. क्योंकि यहाँ पे मेमोरी लोकेशंस का रैंडम सिलेक्शन होता है इसलिए हम इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं. डेटा कैन बी रीड एज वेल एज रिटन ऑन टू द रैम एट एनी लोकेशन. यहाँ पे रैम के अंदर हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं एज वेल एज वी कैन राइट इट ऑल्सो. इफ योर कंप्यूटर टर्न्स ऑफ फॉर सम रीजन व्हाइल वर्किंग योर डेटा विल बी लॉस्ट. रैम के साथ में क्या होता है, अगर हम वर्क करते करते हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो हमारा जो भी डेटा है जिस पे हम काम कर रहे थे वो सब लॉस्ट हो जाएगा. Thus, this memory is volatile as it cannot store the data permanently. क्योंकि ये मेमोरी हमारे डेटा को permanently store नहीं करती, इसलिए ये कैसी है, volatile in nature. Then we have read only memory ROM. It is a memory location जो store करती है boot up instructions which are required to prepare the computer to work properly. ये ऐसे instructions को store करती है जो हमारे कंप्यूटर को prepare करते हैं to work properly. The instructions stored in ROM cannot be changed as they can be read. हम इनको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे वी कैन ओनली रीड दी इंस्ट्रक्शंस. दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन ओनली वंस एट अ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. इट इज अ परमानेंट मेमोरी. रोम जो है ये परमानेंट मेमोरी है, हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को चेंज नहीं कर सकते, ये एक ही बार लिखे जाते हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. दैट इज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर इज ऑफ, इसलिए हम इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं. Currently, RAM is measured in megabytes and gigabytes. Typical computer systems have from 256 MB to 16 GB installed. More amount of RAM you have installed, the faster your system will be. जितना ज्यादा अच्छा आपके पास RAM होगा, उतना faster आपका system work करेगा. Secondary memory को हम external या फिर permanent memory भी बोलते हैं of a computer. It is used to store large amount of data and information permanently. ये हमारे data और information को permanently store करता है. The information remains stored in the secondary memory until you delete it. जब तक आप अपनी information या data को delete नहीं करोगे, it will not get removed from this memory. The examples of secondary memory are hard disk, CD, DVD, pen drive, and memory card. Features of secondary memory: data is permanently stored even if the power is switched off. It has large storage capacity as compared to the primary memory. ये store करता है data को for a longer period of time. It is portable and non-volatile. They are slower than the primary memory. Storage devices. In everyday life, हम use करते हैं many storage places to keep our things such as cupboard, bookshelf, etc. Similarly, जो हमारा computer होता है वो भी क्या use करता है, multiple devices का use करता है to store the data permanently. Let us study about some of them. सबसे पहले आता है hard disk. तो hard disk is the main storage device of the computer. Hard disk हमारे computer का main storage device है. It is usually fixed inside the CPU cabinet. ये हमारे CPU cabinet के अंदर fixed होता है. You can store documents, songs, pictures, games, videos, and software applications on the hard disk. The data is stored on the hard disk magnetically. यानी कि जो data होता है वो हमारी hard disk पे कैसे store होता है, magnetically store होता है. So it stays on the drive even after the power supply is turned off. अगर power supply भी off हो जाती है, still हमारा जो data है वो यहाँ पे stored रहता है. Storage capacity of typical hard disk is usually measured in gigabytes and terabytes. Compact disk, abbreviated as CD, is a small plastic disc on which sound, especially music, can be recorded. CD क्या है? CD के अंदर हम specially sound या फिर music को record करते हैं. CDs can also be used to store information which can be read by a computer. ये एक optical storage device होता है. The data written onto the CD can be read by the laser beam in the CD drive present inside the CPU cabinet. CD is a quite inexpensive way of moving data from one computer to another. इसकी मदद से हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं from one device to another very easily. It can store up to 700 MB of data or 80 minutes of audio. ये measure करता है 4.7 inches in diameter. DVD. DVD stands for Digital Versatile Disc. It is also a type of optical media. ये भी CD की तरह ही दिखता है, ये भी एक optical media है. It looks similar to CD
but has a larger storage capacity. DVD जो है वो store कर सकता है up to 4.7 GB to 17 GB of data. To read and write data on DVD हमें क्या करना है, उसको put करना है into a DVD drive. Blu-ray disc is the successor of DVD. DVD का successor कौन है? Blu-ray disc है. This kind of optical disc can store data up to 50 GB of data, which is more than that of a DVD. Due to its high storage capacity, it is mainly used for storing high quality sound files, games and movies. The name Blu-ray disc कहाँ से derive हुआ है? From the blue violet laser technology, which is used to read and write data on it. Optical storage devices use करते हैं laser light का to read information on the disk and to write new information on the disk. Initially, CDs were used to store only audio files. In 1980, it has expanded beyond audio recordings into other storage uses, such as for storing pictures, videos, and software. Next is flash drive. Flash drive, popularly known as pen drive, is a small, portable and most popular data backup device. ये एक पोर्टेबल डिवाइस होता है. पेन ड्राइव्स वाइडली यूज किए जाते हैं these days to transfer large amount of data from one computer to another. Now it can store up to 2 TB of data. The copying and moving of data from one device to another is easier using a pen drive. The first pen drive was launched in year 2000. It had a storage capacity of 8 MB. Next we have memory card. Memory card एक type of storage media होता है that is often used to store photos, videos and other data in electronic devices. Some of the devices which use memory card are digital cameras, handy cams, smartphones, tablet and music players. The data on the memory card can be transferred. जो हमारे memory card पे data होता है हम उसको easily transfer कर सकते हैं to the computer either using a card reader या फिर using a data cable. Let's revise the chapter. Storage area of a computer is known as its memory. Data stored in a computer is in the form of binary digits, which is 0 and 1, जिन्हें हम बोलते हैं bits. Primary memory को हम main memory भी बोलते हैं. It is a built-in memory of a computer and it is the fastest memory of the computer. Primary memory is further divided into two types: random access memory (RAM) and read-only memory (ROM). Secondary memory is the external part or the permanent memory of a computer. It is used to store large amount of data and information permanently. Some of the storage devices used in computer to store large amount of data permanently are hard disk, CD, DVD, Blu-ray disc, pen drive and memory card. Let's do the exercise of the chapter. First is select the correct option. The storage capacity of typical hard disk is usually measured in GB. How much data a CD can store? 700 MB. Which of the following is an optical disc? Blu-ray disc. Which of the following storage media is found in smartphones and tablets? Memory card. Identify this device. This is a pen drive. Let's do fill in the blanks. 1 byte is used to store a single character in a computer. The dash memory is fastest memory of the computer. So primary memory. ROM stores the dash instructions of the computer. Boot up. Flash drive is popularly known as pen drive. Secondary memory is a non-volatile memory. Let's do true false. A group of 8 bits is called a byte. True. RAM is an example of non-volatile memory. False. A CD is a rectangular in shape. False. Blu-ray violet laser technology is used to read and write data on Blu-ray disc. True. ROM is a non-volatile in nature. True. Primary memory can store unlimited amount of data. False. So students, this was a complete chapter. I hope it is clear to you. Do revise your chapter once again and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.